Now today we will start the next module, which is the very important module. The module name is multiple integral. So multiple integral, in that we will start double integral. So multiple integral, we write here. The chapter name is multiple integral. Integral. Name this multiple integral. There are two types of multiple integral. First one is multiple integral 1. In that we will study double integration. And second one is multiple integral 2. In that we will study evolution of triple integration. Okay. So first we study double integration. Okay. So we will first study the evolution of double integral. Evolution of double integral. Double integral. Here, how to evaluate the double integral? The method of evaluating of double integral depend upon the nature of the curve bounding the region. Okay, there are the region given in the problem, and we have to evaluate the double integral over the bounded region. Okay, so we write here the method of evaluating the method of evaluating the method of evaluating the double integral depends upon upon depends upon the nature of curves, nature of the curves bounding bounding the region, say R, say capital R. Okay, now see here, in that we will study first one. Let us see the first one. If the region R, if the region R be bounded by the curve, bounded by the curves y equal to f1x and y equal to f2x and x equal to x equal to b, then we will evaluate the integral by the following way. Then the evaluation of integral over the region R. So this is your function in two variable f of xy and dA. dA means what? A means what? Area bounded by the region. Okay, dA means what? dA means what? Differentiation with respect to x and y. Okay, so see here, what I have to do here? What I have to do? We will evaluate over the limit a to b, over the limit a to b, then integration of y equal to f1x here, f2x. Okay, and here function is f of x comma y. We write dy and include this in the bracket,
and dx. Okay, here we will evaluate the inner integral first, then outer integral later. Okay, the integral being carried from the inner to outer. Here the integral integral being being carried from inner to outer, from the inner to outer, means what? We first evaluate inner integral first with respect to y by treating x as a constant. Okay, now see here, how to evaluate this integral. We will sketch first the diagram. We sketch the first diagram. This is your x-axis. Just wait. This is your x-axis and this is your y-axis. Okay, so we will evaluate the function over the region R. Okay, if R is the region bounded by the curve y equal to f1x and y equal to f2x. Suppose there are two curve. Suppose there are two curve. Okay, this is y equal to this is f2x. Okay, there is another curve. This is y equal to what? f1x. Okay, there are two curves, f1 and f2. Okay, and the point is what? X. Your x equal to a. This is x equal to a, and this is your x equal to b. Okay, so area bounded by the region means this. If I draw the line like this and this. Okay, this is your x equal to a and x equal to b. X equal to a and x equal to b. This is a and this is the b. Okay, and what have to evaluate? We will evaluate the area bounded by this curve, means what? This area or region. Okay, this is the bounded area by this curve. The point of intersection of this is x equal to a and x equal to b. Over here we will evaluate this area. This boundary of area is what? From here to here we will find the area of this region bounded by the curve y equal to f1x and y equal to f2x and x line x equal to a and x equal to b. Okay, if we evaluate the inner integral first, then here is strip of length. This is the strip. This is the strip of length, and here p and q. Your strip of length is parallel to the y-axis. Okay, your strip of length is parallel to the y-axis if we evaluate the inner integral first. Okay, and outer integral later. Okay, this is the first case, and here origin. So this is the first case, and there is another case also, case number 2. Case number 2, if the region R be bounded by the curve x equal to f1y and x equal to f2y. Okay, x equal to f1y, x equal to f2y, and just write down y equal to c and y equal to d. Okay, then what happen? Then we will evaluate
we will evaluate the function f of x comma y dA over the region R, and this equal to what? This equal to integration of limit c to d, c to d, c to d. Here y, we write here y equal to c. This will what? X equal to a to b है. This is y equal to c to d. Okay, and your inner integration of limit, we will write x equal to f1 y and f2 y. Okay, your function is f of x comma y and d. So here we will evaluate the inner integral first with respect to x. Okay, then outer integral dy. Okay, here the integration, here the integration, here the integration with respect to x is performed first, by treating y constant, by treating y constant. Okay, so we will evaluate the inner integral first by treating y as a constant. Why is this so? Because see here, because this is the limit of function. Okay, so we will evaluate this integral first, then outer integral later, because we want the area of the region bounded by the curve is in a some number, not a variable. Okay, so see what is the picture regarding this statement. You will have the curve bounded by the region, means the curve is given by x equal to f1 and x equal to f2. This is the curve. Suppose your curve is, this curve is given to you. The curve may be any form. Okay, this is your curve. Okay, your curve is given to you and we have to find area bounded by the region. Okay, so your line is given y equal to c and y equal to d. So y equal to c, this is your y axis and this is your x axis. Okay, and your curve is, this is x equal to what? X equal to f1y and this is x equal to f2y. We have to determine the area bounded by this curve. So for this, what I have to do? We will have y equal to c. The line y equal to c means what? This is the parallel to the x-axis. Okay, this is the parallel to the x-axis, and y equal to d is also there, and which is also parallel to the x-axis. Okay, and we will find the area bounded by this curve. So this, your strip is must be parallel to the x-axis. Okay, if strip of length parallel to the x-axis, though, then inner integral evaluated by first with respect to x. Okay, and if your strip of length parallel to the y-axis, then their inner integral with respect to y evaluated first by treating x as a constant. Okay, this is the p and this is q. If strip of length is parallel to the x-axis, then inner integral evaluated with respect to x first. If strip of length is parallel to the y-axis, then inner integral with respect to y evaluated first by treating x as a constant. Here you will treat y as a constant. Getting? I hope you understood this. Yes or no? यस सर. हाँ ठीक है, इसके बेस पे अभी प्रॉब्लम करेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज.
We just evaluate the following integral. Evaluate the following integrals. Number 1. Evaluate the following integral. Number 1. Just take a integral. Integration of limit 0 to 1. Integration of limit 0 to 1. Then integration of limit x root x. X root x. And your function is x square plus y square dy and dx. Okay, where dy dx. Okay, see here d da means what? अभी आप लिख सकते हैं where da means what? Da means dx and dy. Okay, यहाँ पे आप लिख सकते हैं भी, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. Where da is equal to what? Dx and dy. Okay, so we will evaluate this integral first. So let us see how to evaluate. Solution. So first write down let I means integral, I equal to this integral, that is 0 to 1 integration of limit ax to root x and ax square plus y square dy and dx. Which integral we will evaluate first? We will evaluate variable first, then limit of constant later. So this is the limit of this is what? This is the limit of y. This is the limit of y, na? So this can be what? This is integration of 0 to 1 and this is the limit of y. Y equal to x दिए है and your root x. Okay, and x square plus y square dy. This is the limit of y. So we will evaluate this integral with respect to y first, then x सर later. पता चला कि सर y इक्वल टू x दिया है. y इक्वल टू x दिया ही है ना, देखो this is the y equal to x. Okay, your limit is what? Your limit is what? Running from x to y, means this is the y equal to, na? This is y equal to, if limit is given in terms of x, that means what? That limit is limit of y. If limit is given in terms of y, so that limit is limit of x. Get it? अगर सर x y दोनों सर दिए रहेगा तो ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं है. उसमें x के फॉर्म में रहेगा या तो y के फॉर्म में रहेगा. x के फॉर्म में रहेगा तो y का लिमिट है, अगर y के फॉर्म में रहेगा तो x का लिमिट है. ठीक है? ओके सर. हाँ, तो मतलब सर एक तो इसका ये लिमिट, हाँ एक तो इसका ये आगे लिमिट दिया. वाला कांस्टेंट ही रहेगा ना? हाँ, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका कुछ फर्क नहीं करेगा. ये देखो, अगर दोनों लिमिट देखो, ये बोथ लिमिट्स आर विथ रिस्पेक्ट टू x एंड विथ रिस्पेक्ट टू y, बोथ लिमिट आर कांस्टेंट, देन व्हाट हैपन? वी कैन इवेल्यूएट बाय एनी ऑफ द ऑर्डर, चाहे x से पहले करो चाहे y से पहले करो, डजंट मैटर. लेकिन यहाँ पे वेरिएबल दिया है, तो आप ऑर्डर चेंज कर दोगे तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर यू कैन नॉट बी गेट आंसर. So what happen? We will evaluate the inner integral first and outer integral later. Okay, so just evaluate this. So I'm treating this integral constant 0 to 1 as it is. Now we will evaluate first. So with we integrating with respect to y, so x is constant. So integrating, this is x square and evaluation of this is what? Integration of dy means आपको क्या मिलेगा? y मिलेगा. Okay, and plus integration of y square, that is y cube by 3. Now provide limit upper limit and lower limit. Upper limit your this root x, and lower limit will be x. Okay, now dx as it is, write down dx. Okay, now this is what? Integration of limit 0 to 1. Now provide limit upper limit कहाँ पे पुट करना है? Instead of y we will put root x upper limit, and instead of y cube we put root x. Okay, and lower limit is what?
So again minus, instead of y we put lower limit, and instead of y cube we put this lower limit. Just substitute this. So this is x square. Upper limit is what? Root x, and plus what? Root x का cube, okay, by 3, and minus lower limit. Minus lower limit. What is the lower limit? X square. Instead of y we putting x, and plus this is x cube by 3, okay, and dx. अभी सभी x के फॉर्म में आ गया, तो x से इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो इसको जरा अंदर के पहले सॉल्व कर लो. सो वी विल सॉल्व फर्स्ट. So 0 to 1, and this can be written as what? सर This वो can सर ये भी माइनस होगा ना, माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 होएगा ना. माइनस, हाँ ए ब्रैकेट में अब लिख लो ऐसा, ठीक है. ओके सर. हाँ, तो जस्ट सिंप्लीफाई दिस. दिस इज व्हाट? ये 2 हो गया, इसका पावर 1/2. सो 2 to the 4 plus 1 5. So this can be written as what? 5/2, okay, and plus, and this is what? This is root can be written as what? 1/2. The power is how much? 3. So this becomes 3/2. Getting? X raised to 3/2. तो एक्स 2 इंटू 1 अपॉन 2 की होने सर तो कट जाएगा ना. भाई ये पावर में कर रहा हूँ, ये ऐसा है, ठीक है. ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई सर कट जाता है ना. पावर में ऐड होता है, ऐसा है ये. 2 to the 4 plus 1. बेस सेम है ना. The base is same, the power will be added. Okay. ओके सर. हाँ. So this is what? 3/2, and minus, and this will x cube minus x cube by 3, okay, and dx. So just first what we simplify सर this वो भी bracket माइनस anything. रहेगा ना. x3/2 अपॉन 3 रहेगा ना. x raised to 3 by, हाँ यहाँ पे 3 तो रहेगा ना आपका. ओके, जस्ट सिंप्लीफाई इन ब्रैकेट 0 to 1. 0 to 1 x raised to 5/2, and plus x raised to 3/2 by 3, and simplify. Minus, यहाँ पे 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 and minus 1 4. This is 4/3. 4/3 ax cube, okay, and dx. Now integrate this. So if you integrating, so this become x raised to 5 plus 1, that is सर उसमें सर एक्स रेज़ टू माइनस 3/2 और 3 था सर, प्लस माइनस सर दोनों था तो वो काटे क्यों नहीं. कौन सा ए? एक्स रेज़ टू, हाँ 3/2 अपॉन 3 है, और इधर माइनस में भी है माइनस अच्छा, एक्स. ये कहाँ कटेगा? ये कहाँ यस सर. कटेगा बताओ. हाँ, फिर इसको जरा इंटीग्रेट करो. सो इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक्स रेस टू एन प्लस 1 डिवाइड बाय एन प्लस 1. ये सभी एक्स रेस टू एन है, ठीक है. सो डिवाइड करेंगे तो 5, जैसे 5/2 प्लस 1, दैट इज 2, एंड 7/2, ओके. 7/2 डिवाइड बाय 7/2, ओके, एंड प्लस दिस इज व्हाट? 5/2, एंड प्लस 1 करेंगे तो 2 and 2 और 3, 5/2. सो एक्स रेस टू 5/2 डिवाइड बाय ये 3 तो ऐसे ही यहाँ पे 5/2, ओके, एंड माइनस 4/3 एज इट इज. सो एक्स रेस टू 4/4, okay, this 4 cancel, and provide limit 0 to 1. Okay. So now, so this become I'm writing here. So this is equal to what? This is equal to 2/7, okay, 2/7. If I providing upper limit, x 7/2 हो जाएगा. 2/7
Okay, and this will be 2 by 15 if you providing upper limit, and lower limit will be all 0. So I am writing plus 2 by 15. Okay, and this cancel, so minus 1 by 3. Okay, then lower limit will be 0. Just simplify this. Simplify. So what is the LCM of this? What is the LCM? So 2 by 7 minus 1 3 by 5 3 by 15. हाँ, 2 by 7 minus 3 by 15 तो 1 by 3 हो जाएगा. 3/15 तो कैसे होएगा minus भाई? 1 टू by बाई 3. फिफ्टीन आएगा ना. तो 2/15. इससे नहीं, मतलब कि मैं कैसे करना है वो बोल रहा हूँ. हाँ, जस्ट कैलकुलेट करो. तो Sir, 27 upon 315. 27 upon, Sir, 3 by कैलकुलेट करो. 35. 3 by यस, 35. 3/35. सो यू विल गेट 3/35. कैसे आएगा आप कैलकुलेट कर लो. ठीक है. Yes, sir. इतना तो आप कर ही सकते हो. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. ठीक है. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. You understood now how to evaluate this? If there are variable and constant limit, okay, just listen. If there are two limits, first one in terms of variable and second one in terms of constant, then you must have to evaluate the limit with respect to variable first and constant limit later. ठीक है. ऐसा नहीं कि पहले कांस्टेंट से कर दो फिर बाद में वेरिएबल से करोगे तो आपको वेरिएबल में आंसर मिलेगा, तो इसका आंसर रॉन्ग हो जाएगा. तो आपको पहले क्या करना है, लिमिट with respect to variable first, evaluate the integral with respect to limit of variable first, then constant later. यहाँ तक समझ में आया आपको? बोलिए. Yes, sir. यहाँ तक समझ में आ गया. चलिए अभी दूसरा प्रॉब्लम ले ले. किसी को दिक्कत यहाँ पे? बोलो. यस या नो? No, sir. No, sir. हाँ सर. या सर. क्लियर हो गया? चलिए हाँ, सेकंड सर. प्रॉब्लम. ओके, सेकंड प्रॉब्लम. सेकंड प्रॉब्लम इज, चलिए एक कांस्टेंट का ले लेते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to 1 and 0 to 1. Okay, and here dx dy divide by under root of 1 minus x square, then 1 minus y square. We will evaluate this integral first. देखिए. So solution, let I equal to your given integral 0 to 1 and another integral 0 to 1. Okay, and dx dy, okay, divide by square root of 1 minus x square into 1 minus y square. Okay, so this can be written as what? This can be written as integration of limit 0 to 1, integration of limit 0 to 1, and dx into dy square root of 1 minus x square into square root of 1 minus y square. Is there any change? Is there Yes, any sir. change or not? No. देखिए, so here both limits are constant. Okay, both limits are constant, so you can evaluate by any order. पहले चाहे with respect to x से करो चाहे y से करो, doesn't matter. ठीक है. Both limits are constants, we can evaluate by any order. So we evaluate with respect to y first. So this is 0 to 1, 0 to 1, and dx with respect to y first. Okay, so just evaluate this dx and integration of 1 minus x square, 1 minus x square, then integration of limit 0 to 1
dy and integration of what? 1 minus y square. Okay, so just evaluate, दोनों को इवेल्यूएट कर देते हैं, एक ही बार में काम खत्म. So what is the integration of this? What is the integration of this? बोलिए. Integration of 1 upon 1 minus x square. How much? सर 10 आएगा. 10 आएगा. Yes, नहीं 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 10 आएगा. 10 नहीं क्या? होगा सर. कॉट साइन एक्स आएगा ना. यस, साइन एक्स नहीं आता है, साइन इनवर्स आता है. साइन इनवर्स एक्स. हाँ, sin inverse. हाँ हाँ साइन साइन इनवर्स एक्स. ओके, एंड प्रोवाइड लिमिट 0 to 1 डॉट मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अभी इसका आई जाए. व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon 1 minus y square? Sin Zero. inverse y. प्लस वाई हो जाएगा. Yes, sin inverse of y and provide limit 0 to 1. So this is sin inverse of 1 upper limit minus sin inverse of lower limit 0. Okay, and into sin inverse of upper limit, that is 1, minus sin inverse of lower limit, that is 0. So this becomes sin inverse of 1. Which value of sin is give 1? Which value of sin 5 by inverse 2. give 1? So 90. 5 by 2. 5 by 2, that is 90. Okay, sin inverse of 0 is 0. 5 by 2 Okay. यहाँ पे भी आएगा. And into this is also 5 by 2. 5 by 2 minus 0. So this become how much? 5 आंसर आएगा. 5 by Pi. 2 into pi by 2. So this become pi square by 4. Sir, pi. Getting? So this is your final answer. This is pi square by 4. I think you understood this. 4. Yes or no? Yes or no? Yeah, so easy है. Yes. Okay, easy. चलिए अभी दूसरा प्रॉब्लम देखो. लिमिट सर कांस्टेंट मल्टीप्लाई रहेगा तो ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे ना. हाँ, लिमिट कांस्टेंट रहेगा तो आपको कुछ दिक्कत नहीं रहेगा. आप किधर भी कौन सा भी ऑर्डर से इवेल्यूएट कर लोगे. अगर लिमिट एक वेरिएबल दिया है, कांस्टेंट दिया है, तो देन यू हैव टू इवेल्युएट लिमिट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल फर्स्ट, देन कांस्टेंट लिमिट लेटर. इतना दिमाग में फिट कर लो. वेरिएबल अच्छा, को पहले भगाना है, बाद में कांस्टेंट को लाना है. ठीक है. हाँ सर. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3. नंबर 3 में लेते हैं. अच्छा प्रॉब्लम. इवेल्युएट दिस इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 to 1 and integration of limit 0 to y, 0 to y, then x y e raised to x square. ठीक है, and dx dy. Okay, this limit have to this integral have to evaluate. So write down the solution. First of all, we'll write let I equal to given integral, that is 0 to 1, integration of limit 0 to 1, then limit 0 to y, integration of limit 0 to y, and x into y into e raised to x square dx and dy. Okay, which limit we will evaluate first? This is I. x का है ना जो. Okay. We will evaluate which, this is the limit of x. Okay, so we write integration of limit 0 to 1. इसको थोड़ा ऐसा लिखते हैं. Okay, integration of limit, this is x limit. Okay, x equal to 0 to x equal to y. तो ऊपर मैं x नहीं लिखूंगा. And this is x y e raised to x square with respect to the this is limit of x na, so we integrating inner integral. This is with respect to first inner integral with respect to x, and outer integral is what? dy. Okay, so this equal to what? Integration of limit 0 to 1. चलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके साथ हो रहा है? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ हो रहा है. तो y यहाँ पे क्या कर रहा है? बोलो, इधर जाओ, मेरे घर से बाहर निकलो इधर से. तो y को बाहर निकालो. y यहाँ पे ले लिया इसको. ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to y.
यहाँ पे मैं आपको समझने के लिए x लिखा था, बाकी मुझे जरूरत नहीं थी, ठीक है। नहीं, फिर भी लिखता हूँ ताकि आपको समझते चलना है, ठीक है, भूला जाओगे कौन सा लिमिट दिया है। सो दिस इज लिमिट ऑफ x इक्वल टू 0 to y, ओके। नाउ हियर x e raised to x square, okay, and dx and dy, ये तो आप यूलेट नहीं कर सकते, तो हॉरिबल लग रहा है। देखो यहाँ पावर में क्या दिखाई दे रहा है, बैड पावर है। यहाँ पे हमको एक्सपोनेंशियल में क्या चाहिए, हमको सिर्फ x चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया एक्स स्क्वायर, तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है, इसको भगाएंगे फिर से। तो क्या करेंगे, फॉर दिस वी पुटिंग x इक्वल टू वॉट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, मैंने क्या पुट कर दिया यहाँ पे t, ठीक है। हाँ t पुट कर दो। तो सर आप इसमें वाई को सर आगे क्यों लिख दिए? आगे क्यों लिख दिया, यहाँ यस पे सर, देखो वी विल इवेल्युएट इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट, तो y कांस्टेंट होगा ना, तो y की जरूरत नहीं है। सर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तो सर वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, तो वाई स्क्वायर को सर आगे क्यों नहीं किए? वो कहाँ से y होता भाई, वहाँ तो सेपरेट था ना, वहाँ पे प्लस साइन था। देखो यहाँ पे प्लस साइन था, इसको निकाल सकते हो क्या बाहर, नहीं निकाल सकते, तो इसको साइड में लेके इंटीग्रेट किया था ना मैंने। अभी ये देखो ये है ना, तो हमको विथ रिस्पेक्ट टू वाई से करना है, तो एक्स हमारा कांस्टेंट हो गया, इसको बगल में ले लिया, फिर ऐसा इंटीग्रेट किया डी वाई को, तो यहाँ पे वाई मिला, ठीक है। अभी वाई से तो कर ही रहे हैं, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऐसा कर दिया, समझ में आया? ओके हाँ चलिए फिर, सो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू हाउ मच, पावर यहाँ पे क्या कर दिया, हाफ कर दिया, टेकिंग पावर हाफ ऑन बोथ साइड कर दिया, या तो स्क्वायर रूट अब ले लिया, ठीक है। तो हाफ करेंगे तो एक्स चला जाएगा यहाँ से, यहाँ पे आ जाएगा, चलो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। सो डिफ्रेंशिएटिंग डी एक्स इक्वल टू हाउ मच, 1/2 एक्स, सॉरी टी रेस टू हाउ मच, टी रेस टू हाउ मच, 1/2 -1/2, -1/2 आएगा, Yes, sir. and Yes. dt, okay. Now change the limit. Whenever you use substitution, just change the limit. When x equal to how much, x equal to 0, so this implies t is also 0, x यहाँ पे 0 डालेंगे तो t भी मिलेगा 0। when x equal to y, so this implies t equal to how much, x equal to y, तो t equal to, बोलो, वाई स्क्वायर। Hi. y square, Y okay। square. चलिए, therefore this equal to what, आई इक्वल टू, यहाँ पे देखो हमने आई इक्वल टू क्यों लिखा, क्योंकि बीच में अननेसेसरी चीजें लिखा है, इसलिए हमको यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिख सकते, क्योंकि वो किसके इक्वल टू होगा, इसलिए हमको आई को वापस लिखना पड़ेगा, आई इक्वल टू मैं बात कर रहा हूँ, आई इक्वल टू 0 to 1 वाई, ठीक है। अभी देखो इसमें कुछ चेंजेस मत करना, क्योंकि हम खाली ये ब्रैकेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम केवल ब्रैकेट की बात कर रहे हैं, इधर वाई में कुछ छेड़छाड़ी नहीं करना है आपको। तो इसको अब ऐसा लिखो, लिमिट चेंज होगा आपका, x इक्वल टू 0 से कितना होगा, t इक्वल टू 0 में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे t इक्वल टू कितना में जाएगा, t इक्वल टू वाई स्क्वायर में जाएगा, ठीक है। अभी इंस्टीड ऑफ एक्स आपको क्या पुट करना है, ए वाला, इंस्टीड ऑफ एक्स आपको t⁻1/2 पुट करना है, ठीक है। एंड e⁻x स्क्वायर के प्लेस पे आपको t डालना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर के प्लेस पे, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे आपको क्या पुट करना है, t पुट करना है। एंड dx, व्हाट इज द dx, dx के प्लेस पे a डालना है, दैट इज 1/2 t⁻1/2, ओके। और क्या है, dt है, जैसे रख दो सबको, और बाद में क्या है, a है, dy। चलिए सॉल्व करो, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to 1 y, 1y, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to y स्क्वायर। अभी देखिए यहाँ पे t का पावर -हाफ है, t के पावर +हाफ है, तो t⁻0 हो गया, t⁻0 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि रहने दूँ, चलो t⁻0 में 0 लिख देता हूँ, एंड e⁻t हो गया। बाकी क्या बचा, कहीं पे कुछ है, 1/2 है, 1/2 कांस्टेंट है, तो इसको एकदम भगा दो भरे, 1/2, ओके।
एंड डी टी। और ये dt। हाँ डी टी, और बाकी ये वाला तो वैसे रखो, ठीक है। अभी देखो ई रेस टू जीरो क्या होता है, हमारा 1 होता है। चलो पहले नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट क्या है, 0 to 1, 0 to 1, देन y, देन y के बाद क्या है, a है। तो यहाँ से देखो इसको यहाँ पे है तो यहाँ इसको भी बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, y/2 हो जाएगा। और इंटीग्रेशन इसको हम ऐसे लिखते चलेंगे, इंटीग्रेशन 0 to y², 0 to y², e⁻0 1 होता है तो नो नीड टू राइट, आपको e⁻t dt हो जाएगा, e⁻t सर e⁻t आणि बस। हाँ and dy later. So this equal to integration of limit 0 to 1 y/2। अभी इसको इवेल्यूएट कर दो, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है e⁻t इज व्हाट, e⁻t ही होता है, उसमें क्या बड़ी बात है। एंड प्रोवाइड लिमिट 0 to y², 0 to y² एंड dy, ठीक है। एंड दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to 1 y/2, ओके। अपर लिमिट e⁻y² माइनस लोअर लिमिट e⁻0 एंड ए वाला dy, एंड दिस इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to 1 y²/2, ठीक है। सो ये आपको क्या मिलेगा, e⁻y² माइनस e⁻0 इज 1, -1। यस, ओके, dy, ओके। चलिए एक कांस्टेंट है 1/2, तो उससे कुछ काम नहीं है, तो टेक आउटसाइड 1/2 आई एम टेकिंग आउटसाइड। इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to 1, इसको जरा y को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो y e⁻y², ओके, एंड माइनस y, ऐसा मिल गया हमको, एंड dy, ओके। चलिए इसको जरा सेपरेट कर देते हैं। सो दिस इक्वल टू, इसको सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब जाता कि अच्छा लगेगा आपको, नहीं तो बाद में फिर से कांस्टेंट में दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो रहने देते हैं ऐसे, y/2 1/2, ओके। एंड बिग ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to 1 y e⁻y² एंड dy माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to 1 y एंड dy, ओके। जस्ट सिंप्लीफायर, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में इसमें थोड़ा मचमच है, तो इसको बाद में समझेंगे। 1/2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to 1 y e⁻y², ओके, e⁻y² एंड dy। इसकी वैल्यू तो हमने निकाला था ना, कहाँ निकाला था बताओ, इसकी वैल्यू तो हमने निकाला था, ये वाला है ना, ए ब्रैकेट आ रहा है हमारा बारे, ए ब्रैकेट आ रहा है, ए ब्रैकेट आ रहा है, ए ब्रैकेट आ रहा है, ए है ना इसका वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू ये है ना, यस ये है सर। कि नहीं है। हाँ तो इसको हम उसके प्लेस पे ये लिख सकते किसकी वैल्यू सर, वो सर किसकी वैल्यू है वो? हैं, ये देखो, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to 1 y e⁻y² dy, ठीक है, ये देखो यही तो है ना वो लिमिट, लेकिन यहाँ पे क्या है, y है, और वहाँ पे लिमिट देखते हैं क्या है, नहीं है, वो नहीं है, ठीक है, उसके चक्कर में मत पड़ो। तो माइनस ये क्या आएगा, y²/2 अपर लिमिट 0 to 1, ओके, अपर लिमिट 0 to 1, ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं। सो दिस इज y²/2 and 0 to 1 and big bracket, okay। So this is 1/2 bracket integration of limit 0 to 1 y e⁻y² dy माइनस, ये तो क्या मिलेगा आपको, 1/2 मिल जाएगा, ठीक है, ये 1/2 मिलेगा। अभी मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये मैं यहाँ पर भी कर सकता था, लेकिन क्या है ना, यहाँ पे थोड़ा सब्स्टिट्यूशन में दिक्कत होता था, इसलिए मैंने इसको अलग से लिया, ठीक है। चलिए अभी इसको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू पुट अगेन, यहाँ पे देखो बैड पावर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ पहले। एंड दिस इक्वल टू आई इक्वल टू व्हाट, 1/2
इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to 1 y e raised to Y y into y e raised to y square dy माइनस 1/2 यही है ना, देख लो फिर से। यस हाँ हाँ, नाउ व्हाट हैपन, दिस इज द बैड पावर। ओके, ई के पावर में एक्स या वाई को छोड़ के कुछ भी रहेगा तो हमको जो पावर रहेगा उसको इक्वल टू टी पुट करना है। ठीक है, इतना ध्यान रखो माइंड में। ई को छोड़ के बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। साइन कॉस थीटा फीटा जो भी एक्स पावर 100 कुछ भी रहेगा ना, हमको उसको हटाना है। तो फॉर दिस व्हाट हैव टू डू, Y square हाँ वाई स्क्वायर इक्वल टू, अभी हमने टी तो ले चुका है तो कुछ दूसरा ले लेते हैं, चलो यू ले लेते हैं। ठीक है, सो दिस गिव्स वाई इक्वल टू यू बाय 2। ओके, डिफरेंशिएट दिस, so dy equal to 1/2 u raised to minus 1/2 and du. Okay, now whenever you use substitution just change the limit. When this is y, when y equal to what, y equal to 0, so this implies that u is also 0, u is also 0. When y equal to what, 1, so this implies that u is 1, there is no effect in limit. So therefore I equal to 1/2 ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to 1 सेम है। अभी y के प्लेस पे हमने क्या रखा है, a रखे, y के प्लेस पे u रेस टू 1/2। ओके okay, y equal to u raised to 1/2, then e raised to y square is u, y square is u, dy is what, 1/2 u raised to minus 1/2 and du। ओके, ये तो इतने का हुआ और बाद में क्या है, -1/2। ठीक है, एंड दिस इक्वल टू व्हाट, 1/2 एज इट इज। एंड देखिए यू रेस टू 1/2 -1/2 और +1/2, यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वाले को मैं यहाँ पे लिखूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to 1 u raised to 0, then e raised to u, e raised to what, e raised to u and du। u du -1 हाँ du, -1 ओके, हाँ -1 नहीं, -1/, अरे देखो यहाँ पर भी 1/2 है और यहाँ पर भी 1/2 है तो ना। 1/2 आपने बाहर निकाला ना, 1/2 हाँ आपने बाहर बाहर निकाला, निकाला ना, यस यस तो बाहर यस निकाला ना आपने। यस यस यस, तो यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ मैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इक्वल टू 1/2, 1/2 को मैं और बाहर ले लिया तो 1/4 हो गया। 1/4 सो दिस बिकम, यस 1/4 and integration of limit 0 to 1, okay, and e raised to u du minus 1, okay, this equal to 1/4 e raised to u and provide limit 0 to 1, e raised to u, this is e raised to u, okay, and provide limit 0 to 1 and -1, okay, big bracket. So this is equal to 1/4 e raised to 1 minus e raised to 0, okay, and -1. So this gives 1/4 e raised to 0 is -1 -1 and -1. So this become 1/4 e -2, यही आ रहा है आंसर। ओके, हाँ सर, सो दिस इज यही आंसर है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। हाँ सर, आ तो यही रहा है। गेटिंग, हाँ यही आएगा।